this session. And I guess we have done up till question number 3, right? I explained you question number 3 that you have to try it on your own. Hopefully you did. Let's go for question number 4, right? So we were discussing about cylinder and just two more exercises left after this. I don't know, maybe one more cylinder, cone, and no, two more. So let's go for question number 4. If the lateral surface area of a cylinder is this, lateral means the curved surface area. What's the curved surface area of cylinder? Yes. What's the formula for it? Anyone? 2 pi r. The 2 pi r. The curved surface area of cylinder is 2 pi rh. And the height that is given is 5 centimeter. Find the radius. Radius find करना है हलवा question. Let's do this halwa question. So curved surface area is 94.2. Everything is in centimeters, so I don't have to worry about the units. Now 2 pi RH is equal to 94.2. 2 times 20. Okay, pi value is have to be what? It's been mentioned here, 3.14. R is R. H we need to find, no, H is given. Now let's take everything here in the divisible part and you guys will solve this for me. Let's see if we can. Tell me the value of R, not looking at the back, solving it. Because you won't be able to look at the back in the exams. भैया 3 सेंटीमीटर 30 centimeter. So what you did, you kind of do this, and you do this, and you do this. 5 times 2 gives me 10. 10 cancel out with 10. And 314 times 3 is actually 942, isn't it? So R is equal to 3 centimeter done. Did everyone get this or was I too quick? Yes. Did you get it? यस Did सर you? Okay. Okay. Only one yes, sir. How about others? What about others? Are they having fun? So let's do यस सर volume. Now volume formula for cylinder is cylinder पाई आर स्क्वायर एच pi r square h पर आंसर भी बता दो r तुम्हारे पास है h तुम्हारे पास है pi तुम्हारे पास है जल्दी से निकालो और बताओ आंसर पीछे से देख के नहीं बताना है 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट किया सेंटीमीटर ये हाँ भैया किया है कॉपी में कर रखा है ठीक है चलो I take your word for it. So 3.14 3 times 3 h is 5. If I have to solve these guys, I can I can multiply all this stuff, okay, instead of canceling out because that will make my thing difficult. So 314 times 5 nines times is 45 over 100. If I multiply these guys, I don't know what I will get. 22, 7, 7, 15, 16, 4, 5, 0, 13, 11, and it's 15130 if I'm not wrong. Now this will cancel out and that will become a decimal over here, isn't it? This will become a decimal here. 151.3 centimeter cube. Yes, Sambhavi answer correct. Hey? Or is it wrong? I don't know. Maybe my calculations may be wrong. I don't know. Maybe. I don't know. Yes, is my answer correct? Anyone check out from the back of the गलत है गलत है क्या हुआ ऐसा क्या बुक के पीछे भी 141.3 पे रखा है हाँ yes. Let's see then again 5 times 27 15 16 4 the 4 5 for the 12 0 13 11 no the answer should be this only 5 r square I'm putting the right value it is 5 I'm putting the right value actually answer should be this only 151.3 सर यहाँ पे ये 4 आएगा इधर आपने प्लस गलत करे इधर oh right यस सर yeah Bhaiya gone mad good good so that's good okay hope that means you're paying attention some of you are so how about we move further we have question number 5th now let's go question number 5th. It cost 2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. What do you mean by deep? What do you mean by deep? सर गहरा
गहरा height of हाइट, गहरा तो मुझे भी पता है भैया, हिंदी मत बताया करो, तुम और वैभव दोनों एक जैसे हैं, हिंदी बता देते मेरे को। तो भैया दीप का मतलब मैंने हाइट बताई है। तेरे को तो सुनाई नहीं मैंने, और तू आया कब है, लेट हो गया आज क्लास में। हाँ चलो अब आगे देखते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ दिस, ओके देखो अंदर वाला पोर्शन पेंट करना है। सपोज आई शो यू समथिंग सिलेंड्रिकल, दिस इज माय हैंड एंड आई हैव टू पेंट इट लाइक आई एम नॉट मेकिंग अ लस्सी, आई एम टेलिंग यू, ओके। सो अंदर वाला पोर्शन पेंट करना है। तो टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास, टोटल कॉस्ट जो है मेरे पास, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय बिट ऑफ फेस, ओके, फोकस ऑन द व्हाइट बोर्ड। Total cost. So total cost is what 2200 if you will read the question, right? And my rate per meter square is rupees 20. I don't know why they are not writing the rupees. Yes. Find the inner curve surface here. Now before coming to finding out, I need to talk about something. I don't know, maybe I have talked about it. See, if you have to find something, this is some quantity right here, a numerical quantity. You always divide the bigger guy by the smaller guy. Did I have talk about this? Have we talked about this? I guess we have, right? So if we have to talk about something, let's take another example. Let's take example of chocolates. Okay. What about, no, let's not talk about chocolates. Let's talk about painting a wall. Okay. Let's talk about painting a wall. So I have to paint this wall. The total cost of painting is 100 rupees. Kind of cheap, but okay. And it's 100 rupees total cost, and per meter square, the painter takes 10 rupees. Okay. Now, how many meter square is he painting actually? Can you tell me? 10 meter square. 10 meters square. That actually makes sense. So what we did, we divided the whole cost by a smaller cost, that is per rate, and we got the quantity that is being asked. So in the similar manner, we can actually find out the inner curve surface area here. So inner curve surface area will be the whole cost divided by the rate. 110 meter square. So ये है 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, सबको क्लियर हुआ? यस, Yes, sir. गुड गुड। The second one, radius of the base. So radius of the base के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले में डाल देंगे। फॉर्मूला मेरा इतना आया है कर्व सरफेस, बेशक इनर हो, डजंट मैटर। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू निकालनी है, एच पता है तुम बालकों को, पाई की वैल्यू 22/7। जल्दी से आर बताओ, टेक के टाइम। One 1.75 meter. कोई और बालक है जिसका आंसर आया है? एक ही बालक की आवाज आ रही है मेरे को बस। I don't think this is that difficult. We have 1.75. 22 5 is this. This is 3.5. I don't know, मेरा तो 3.5 आ रहा है, let me check. 7 ये 10 है, हाइट 10 है भैया। हाइट 10 है? अरे ये Yes, कैसा हो भैया। गया? अरे Yes, अरे sir. अरे भैया, अरे हाइट 10 है, धोखा हो गया। 10 है, हाइट 10 है। Let's change the calculation. That will be 1 to 10, 2 times 22 times 10 times 7. Oh, you can just cancel the zeros. 11 times 2, 7 upon 4 gives me, I don't know, 1 point something. 1.75. Sir, 1.75. meter. So that's my radius.
What do you understand by capacity? What we need to find? So volume. To calculate the volume, then you have all the values. You have your radius, you have your height, you have your pi, not the eating pi, the value pi. Tell me the value. भैया 96.25 क्या 90 कर रहा है भाई? भैया 96.25 मैं तो 7/4 लूंगा कैलकुलेशन इजी करने के लिए भाई. क्यों डेसिमल में पढ़ूं? H is 10. 7 तो 7 कट गया. 2 times 2 5. Okay, 2 times 2 5. Sorry, 2 11. Now these calculations are easy. 11 times 7 is 77 times 5 over 2 times 2 is 4. And if we multiply these guys, 535, 535, 38 over 4. Now if we divide this, it's 9, it's 6, it's 2, 5. Is it the answer? यस भैया मेरी आंसर आया Good. That means Yes, still sir. got it. Bhaiya still got the calculations. Bhaiya still know how to do the math. So question number 5 is done. That's the important one. It's kind of used all my concepts actually. That's why I will mark this important. So let's go for question number 6. Now before moving to question number 6, I need you to tell me the relation between liters and meter cube. What is the relation between liters and meter cube? If you भैया remember. 1 मीटर क्यूब सर एक बार सारे फॉर्मूला दोबारा बता दो. अरे सारे फॉर्मूला दोबारा लो भाई. सारे फॉर्मूला दोबारा कहाँ से स्टार्ट करें? कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं. सो मैं नहीं बताऊंगा, ये बच्चे बताएंगे तुम्हारे सहपाठी. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB plus BH plus HN एक बार जिसने आंसर दे दिया फिर से नहीं बोलेगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैं बता 2LB plus BH. अरे भैया 2HL plus B. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो सब शांत हो गए फॉर्मूले के नाम ना. इनको ही बताने दो, बाकी सबको. ये भी तो है क्लास में. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो 8th ग्रेड में है. बहुत सारे पानी में डूब मारो. L into B into H. गुड. क्यूब पे आते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A square. वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब. गुड. आ जाते हैं अब सिलेंडर बाबुआ पे. सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi R. 2 pi RH. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi R H plus R. 2 pi R R plus H. गुड. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Pi R square. 2 pi r. अरे 2 पाई मत डालो भाई हर जगह. 2 तुम्हारा इतना फेवरेट नहीं होना चाहिए. कौन की तो बस अभी हमने कर्व और टोटल की बात करी है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन बड़ा लिखा है मैंने. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल प्लस आर. S plus N इन्हें लर्न कर लो. अभी तक लर्न नहीं है तो लर्न कर भैया लो. हॉलो सिलेंडर का भी तो है Hollow cylinder is not a formula that is actually been derived. Okay. So square. सफेर. हाँ सफेर भी डाल दो. सफेर कैसे भूल गए हम? गेंद. हमारी गेंद कैसे भूल गए? गेंदा. So curved surface area of sphere 4 pi r square total surface area of sphere
2 pi r देखो 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 फोर देखो फोर देखो फोर पाई स्क्वायर। देखो देखो इनका दिमाग देखो देखो क्या टॉप और बॉटम होता है सफेयर का? नहीं भैया, नहीं होता ना, अनलेस यू कट इट समथिंग, कुछ भी 4 बाय आर स्क्वायर ही होता है दोनों इसका। दैट्स व्हाई आई रोट इट डिफरेंट। मेरे को चेक करना था कौन बूढ़बक है ऐसा जो करता है। ये कर्व्ड हो गया, टोटल हो गया, वॉल्यूम की बात ही नहीं करी अब तक। और क्या रहेगा? कर्व हेमिस्फेयर रह गया, लो आधा गेम, इसको बीच में से काट दिया हमने। जो सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 pi r square total surface area of sphere hemisphere 2 pi r square 3 पाई आर स्क्वायर। तो बस ये सारे फॉर्मूलेस लिख दिए तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। थैंक यू सर। वेलकम। मैंने तो कुछ बताया नहीं, तुम बच्चों ने बताया था कुछ। भैया कितने हाँ, बोलो। भैया आपने अभी बताया था कितने लाउड सेंटीमीटर बोलो, स्क्वायर लाउड, टोटल? वॉइस कट रही है तुम्हारी। माइक्रोफोन को पकड़ो हाथ में और बोलो। भैया हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब हैज 1 मीटर? हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब हैज 1 लीटर? बताया तो था। यस भैया, भैया याद नहीं आ रहा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। देखो धुआं वाला आ गया। यस भैया समझ गए। This is the relation if you want to write. Prepare a chart, prepare a beautiful sheet, white sheet. Write all these formulas and conversion in it and paste it over the wall. That is how I used to do it when I was a kid. Or I am still a kid. I really like it. Okay, let's go for question number 6, 7, 6. So वहां तक पहुंच गया देखो, I can hear. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter. So capacity और height है इतनी, इतना liters. Volume is इतना liters. Liters. Okay. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? Okay. So how many square closed है, मतलब कि it is asking us total surface area then. Right. Square meters से मुझे पता चला कि एरिया की बात कर रहा है. Then I looked for closed. That means total surface area की बात कर रहा है. That makes sense, right? yes sir Okay, that is a way to predict it. Now let's jog our memory with the relation between liters and meter cube. If I remember, it's 1 meter cube is equal to 1000 liters, isn't it? Yes. Or am I wrong? Let me look at yeah, it's okay. So 1 liter should be 1 over 1000 meter cube, isn't it? yes sir Yes. So I can write, let me see if I can do it in a smaller way. Total surface area of cylinder, right? It's 2 pi r h plus r. Is there a shorter way to do it? No, there isn't. I need to do it longer. So if I will divide this guy by 1000, okay, that will be in meter cube. I'm not putting decimals because that will make my calculation tougher. Now let's in order to find my total surface area, mute your microphone. This can be unmute. In order to find the total surface area of the cube of the cylinder, the formula is 2 pi r h plus r, if I'm not wrong, right? So we need R and we need H. H has already been given, R we need. So R we can find from this. So volume is pi R square H. That is equal to this. I have converted into meter cube. Now pi is 22 by 7. Okay, it's not given that you have to take 3.4. R we need to find, H is 1. Okay, so let's take this point and make another 0 here. Now let's solve this. Focus on my calculations. So I will cross multiply with 7 and 22 will go down. 1, 2, 3, 4, 1, 2. If I'm not wrong, 22 times 7 gives me 154, isn't it? So it's 7 times 7 over 10,000. Now you can take the square root. You will observe one thing, that they are perfect squares. 7 will come out, 10,000 will come out with 100, and R is 0.07 meter, right? Yes, everyone comfortable? yes sir Good. Easy one, right? Easy one. Now let's find my total surface area. Or how about you do it?
You do it. 2 pi r h plus r. I have told you all the values. R is 0.07, or you can say 7 over 100. And my h is 1 meter. Let's see if you can plug in the values and calculate the total surface area. Do it. Don't tell me from the back of the exercise. यार आप म्यूट कर दो उसे। मैं म्यूट कर दूं? अच्छा, यार हो जाता है। किसको म्यूट कर दूं? अपने आप को? फिर कोई भी फिर अनम्यूट नहीं कर पाएगा ना अपनी तरफ से, तो Yes, प्रॉब्लम sir. हो जाएगी। नहीं, म्यूट नहीं करना भाई, तुम सबको तो म्यूट नहीं करना मेरे को। आई जस्ट से Yes, sir. टू अनम्यूट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, स्पेशली वैभव। वैभव जब भी अनम्यूट करेगा जब रिक्वायर्ड हो, बहुत अनम्यूट रखता है तो ठीक है। तो पीछे से नॉइस आती है, डिस्टरबेंस होती है ना, इसलिए। तो अगर मैं तुम लोगों को म्यूट कर दूंगा फिर मजा क्या आएगा? फिर तो मैं ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ, नेता हूँ ना, तुम लोग जनता हो, सुन रहे हो, ताली बजा रहे हो, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए तुम लोगों के जवाब, जैसे अभी तुम लोग दोगे टोटल सरफेस एरिया का। किसी का आंसर नहीं निकला अभी तक भाई। भैया बस 1 मिनट। ये मेरा आ रहा है 0.4708। भैया 0.47। 0.47, चलो देखो, 2 times 10 cube by 7, r की वैल्यू है 7 over 100. Now I always try to take the easier kind of data. So h is 1, and this time I will take decimals because there is no point of using the 101 here. This will not make anything easy. So 7, that's 44 over 100, and this guy is 1.07, and this guy is 0.44, this guy is 1.07, and I don't know if you people know how to multiply decimals. You should. If you don't, and if you don't know how to multiply decimals, that's okay. You can multiply 44 with 107. If you multiply 44 with 107, you get something like this, right? So 8, 10, 7, 4708. Now 4708 divided by 2, 3, 4. So 0.4708. Is it correct? The answer correct or not? Or maybe it may be wrong. यस भैया यही आया है। Or maybe यही आया। So यही आया भैया कभी। चलो, सबको सामने आया या फिर अभी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर बैठे हैं, लेटे हुए आराम से, भैया चला रहे हैं वीडियो और आराम से लेट के देख रहे हैं? एंजॉय। सर आ गया। आ गया, गुड। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। चलो तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Our goal for today is to finish this exercise and start the next one also. That is the cone one, I guess. Yes. Okay. So 7th question. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior.
So this is going to be interesting. See, lead pencil hoti bhi aisi hai. We have a pencil. Okay, let me draw a perfect pencil for you. It's kind of quite thick. That's okay. So that is my lead pencil. Now we are not sharpening it. It's the new one. Okay. Now graphite is being filled in it, and you know the graphite is inside, जिसको हम दांतों से चबाते हैं जब फ्री टाइम होता है ना क्लास में, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, मैं तो करता था. तो so I put inside a graphite here. Okay. Red तो नहीं होता है वैसे, ग्रे कलर का होता है, लेकिन okay, it's my word, I can do anything. So fill in the diameter of the pencil is 7 millimeter. Okay, that's a new unit. The diameter of the pencil, the whole pencil, let's call it capital. And the diameter of the graphite, that means this smaller guy. Okay, this smaller guy is 1 millimeter. The length of the pencil, that means 14 centimeter. Find the volume of the wood, and this is a case of hollow cylinder kind of, and that of the graphite, and volume of graphite. Yes. सबसे पहले बालको मुझे बताओ कि मिलीमीटर सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है? 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Yes, भैया. 1 centimeter is equal to 10 millimeter is absolutely correct, and I want you people to write this down in front of your question in order to remember this. Now, let me show you this question. What it is asking if I have a pencil. I don't use pencil now. You don't also. I don't have a pencil. Maybe I have it. No, I don't. So, okay, let us imagine the things. So it is asking us the volume of the wood. Now, when I say the volume of wood, that actually means the hollow cylinder part. See, I will make it clear to you. थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा. तुम लोग तो हो ही बहुत क्रिएटिव है ना. तो देखो, तो भैया हमारे एक पेंसिल होती है ऐसे, मैंने बड़ी कर दिया ताकि तुम लोगों को दिखे. वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ रहा है, मतलब वुड की कितनी कैपेसिटी. वुड तो यही होगा ना, अंदर तो ग्रेफाइट भरा हुआ है. आर यू पीपल गेटिंग इट? यस. Yes, sir. So that's actually the volume of hollow cylinder जो हमने कर रखा है. ठीक है. Volume of hollow cylinder का फॉर्मूला बताया था कि pi capital R square minus small r square h. I'm not deriving it again. If you want to derive it, you can. That's the बड़े वाले वॉल्यूम से, बड़े वाले सिलेंडर से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर दो, pi h कॉमन आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाता है. राइट. तो अब इसकी हम निकाल लेते हैं वैल्यू. That will be the volume of wood. Volume of लकड़ी. लकड़ी भाई साहब, अब लकड़ी भाई साहब के लिए पहले हमें इनको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में है. these guys are in millimeters. So if I divide it by 10, I will get in centimeter, right? If I divide this guy by 10, I will get it in centimeter again. So let's plug in the values. That's my pi. Pi is 20 by 7. R square, 0.7 square minus 0.1 square, and h is 14. So 7 times 2 gives me 14, so that's okay. 22 times 2 gives me 44. So now let's calculate these guys. It can be written as 7 over 10, so you can write 49 over 100, right? And this can be 1 over 100, right? So 44 times 48 over 100. Now if you multiply these two, tell me the answer and divide them by 100. Put in the 2 decimals. Yes, what will be the answer? कैलकुलेशन करनी देती भैया ने. We are 21.2. ये आ रहा है 21.12, right? Centimeter cube, right? That's my first part. Yes, भैया. Now what what about volume of graphite? How can we find the volume of graphite? That's the volume of inner cylinder, isn't it? अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कोई तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कहेंगे. वही तो हमारी ग्रेफाइट भरी हुई, जैसे लिखते हैं हम ये वाला.
तो मतलब कि हम क्या लेंगे, स्मॉलर r लेंगे और इसका वॉल्यूम निकाल देंगे पाई r स्क्वायर h से. हाइट विल बी द सेम. निकालो जल्दी से, स्मॉल r लो. Oh, we made a huge blunder here. We did wrong. We did something wrong. See what we did wrong. हमने डायमीटर की वैल्यू प्लग इन कर दी, हमने रेडियस की वैल्यू प्लग इन नहीं करी. एंड यू पीपल आर लाइक, हाँ भैया चला दो, हमें तो सब चलता है, जब तक आप कर रहे हैं हमें तो सब चलता है. तो 0.7/2 होगा और यहाँ पे स्मॉलर रेडियस प्लस 0.1/2 होगा, राइट. जब भी तो वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं ये वाली. तो ये तो भैया गलत हो गया, और तुम लोगों ने कर लिया. हाँ भैया आपने कर दिया तो सही है, हमें क्या फर्क पड़ता है. तो कैपिटल आर की वैल्यू कुछ और आएगी. कर देंगे ना, 44 into 48/200 कर देंगे. 0.05 ये एक्चुअल वैल्यूज. नाउ टेल मी द आंसर. डालो जल्दी से वैल्यूज, बताओ आंसर क्या आता है. h क्या 14 r स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर. करो जल्दी से सॉल्व, बताओ आंसर. 5.28. 5.4 28. 5.428. ओके. भैया सिर्फ 5.28. सिर्फ द आंसर इज सिर्फ 5.28 भाई. ओके. So 35 square gives me 1225 over 100 and that gave me 25 over, okay, 100 का square is 10,000 actually. 1 2 3 4, right. So I'm doing it my way, you can do it your way. 44 times 1200 over 1 2 3 4, so that gives me, so 44 times 12, 8448, 812. So Sambhavani's answer is absolutely correct. I'm getting the same answer. I'm happy with it. So it's centimeter cube. I'm really sorry about the mess we have created here, but it is a calculation that we need to do. Now let's join another link because this is going to end.